A very good morning to all of you, my dear friends. Sales of Goods Act ର लास्ट पार्ट यानी पार्ट 4 आज हमें डिस्कशन करिबा राइट यस सब पिला माने फटाफट देखिबे लास्ट पार्ट रे हमें कौन कवर करिबा अनपेड सेलर भाई नारू तुमको कौन लागुची ना कहूची अनपेड सेलर जो सेलर को आमे पेड करिने ताकू आमे अनपेड सेलर कहिबा तो ए चैप्टर रे आमे पढ़िबा राइट ऑफ एन अनपेड सेलर फॉर एग्जांपल एक्स होची सेलर वाई होची बायर वाई कौन कला ना ता मैरेज पार्टी रे एक्स दुकान रु सबुतक ग्रोसरी नेला जिते प्रकार जहा आइटम दरकार थिला सबुतक नेगी गला जहार कॉस्ट होची लेट सपोज 1 लाख तो जिते बेले एक्स ताकू पैसा मागुची कथा थिला सेमानक कॉन्ट्रैक्टर थिला दे 2 मास मते पैसा दे 2 मास पई मते जिंस दे 2 मास परे मु तो पैसा पेमेंट कर दे जिते बेले एक्स ताकू मनी मागे पैसा मागे से कहूची काली तमे संध्या बेल को आस पहर दिन सकाळ को आस फेब्रुआरी मास 29 तारिख रे आस 33 तारिख रे आस चेक दउची चेक डिजनर होउची एटसेट्रा अर्थात वाई पे करूम इन दैट केस आमे एक्स को कहिबा अनपेड सेलर तो जदि तुम मानक भितरु किए भी काली का डेट रे बिजनेस करे कारण वाणिज्य बसती लक्ष्मी बिजनेस रे ही आमे बहुत आगु जाई परिबा जॉब कोले जॉब रे किछि नाही हैंड टू माउथ सैलरी जदि तमे जॉब करिवो जति की सैलरी आसीबो सेति रे खाई पी बंची परिबो आउ किछि तमे करि परिबो केही जणे कहिचंती जॉब कोले आमे केवल जरूरत आपण मानकर पूर्ण करि परिबे किंतु बिजनेस कोले आपण मानकर शौक आपण माने पूर्ण करि परिबे वाणिज्य बसती लक्ष्मी जदि तम मानक भितरु की भी काली सकाळे जाय के वाणिज्य कला यानी बिजनेस कला इन दैट केस जदि सी बाकी रे कहा को जिंस बिकिछि एवं डेप्टर ताको कोन करूनी पेमेंट दउनी ताहले तुम मानकर जो मान रहिलो अनपेड सेलर कोन कोन तुमरो राइट्स अछि से बाबद राजी पढिबा एवं जानिबा बुझी होउची यस तो दी प्रकार राइट्स अछि राइट एगेंस्ट गुड्स मु गुड्स एगेंस्ट रे कोन कोन मोर अधिकार अछि जे गुड्स मु सेल करिछि से गुड्स एगेंस्ट मोर कोन कोन अधिकार अछि आउ गोटे होची राइट एगेंस्ट बायर बायर कहिले जे लोक मोठारु जिंस किनी कि नेछि ता एगेंस्ट मु कोन कोन एक्शन नै पारे देखिबा राइट एगेंस्ट गुड्स जति हमें प्रथमे देखिबा दीटा केस प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड टू द बायर जदि तमे ओनरशिप ट्रांसफर करि देइछो ताहले से केस रे तमरो कोन कोन राइट्स आसी से केस रे तुमरो राइट्स आसीबो राइट ऑफ लाइन माने जिंस तमे अटकेई परिबो स्टॉपेज इन ट्रांजिट जदि तम पाखरु जिंसटा बाहरी जाईची ट्रांजिट रे अछि ट्रांजिट माने कोन एटा होची एक्स रो एड्रेस एटा होची वाई रो एड्रेस ये होची सेलर ये होची बायर तो ये आ पाखरु गाड़ी बाहरी जाईची ए बाट रे अछि किंतु बायर पाखरे पहुंची ताकू हमें कहबा ट्रांजिट तो सेलर रो राइट अछि ट्रांजिट रे ताकू अटकेई परिबो एवं रीसेल करि परिबो से गुड्स जदि तमे प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हिसाब रे ड्यू डेट रे न दियो ताहले से रीसेल मध्य करि परिबो सेकंड पॉइंट आसुची जदि कोन हेची प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट बीन पास्ड टू बायर प्रॉपर्टी इन गुड्स कहले ओनरशिप मु लास्ट क्लास रे मध्य डिस्कशन करिछि जदि ओनरशिप ट्रांसफर हेनी ताहले हमें कोन करि परिबा विथहेल्ड करि परिबा डिलीवरी की दबानी डिलीवरी दबानी लाइन करि परिबा गुड्स को अटकेई परिबा स्टॉपेज इन ट्रांजिट एवं रीसेल केवल गुटी एडिशनल आसुची जे आमे कोन करि परिबा डिलीवरी को विथहोल्ड करि दबा बाकी आउ जहा थिला एपटे से जदि हमें राइट एगेंस्ट बायर कथा डिस्कशन करिबा राइट एगेंस्ट बायर कहले से पर्सन एगेंस्ट हमें कोन कोन एक्शन नै परिबा ना ताकू सीउ करि परिबा कोर्ट रे प्राइस पई
स्वीट फॉर प्राइस, स्वीट फॉर डैमेज जहाँ मोर लॉस है ता पाखरु मु इंटरेस्ट रिकवर करि परिबी, स्वीट फॉर इंटरेस्ट, स्वीट फॉर डैमेज, स्वीट फॉर इंटरेस्ट जहाँ मोर लॉस है सेति पई क्लेम करिबी एवं इंटरेस्ट जति दिन से पैसा देनी ताकू मध्य मु क्लेम करि परिबी। ये होची ओवरऑल चैप्टर, एतिक रे ए चैप्टर सरी जाइछि। चैप्टर मींस ए पॉइंट सरी जाइछि, अनपेड सेलर पॉइंट सरी जाइछि। आगु जीवा एबे पढिबा इंट्रोडक्शन यानी मीनिंग। ए कॉन्ट्रैक्ट प्रोमाइजेस ए कॉन्ट्रैक्ट comprises of reciprocal promise, reciprocal promise कहले x रो आ y भितर किछि कॉन्ट्रैक्ट होछि, दैट मींस x होछि सेलर, y होछि बायर। x रो प्रॉमिस होछि से y को डिलीवरी दबो गुड्स, y रो प्रॉमिस होछि से x को कोन करिवो ना रुपीस पेमेंट करिवो, ये गुड्स सप्लाई करिवो, ये रुपीस पेमेंट करिवो। In a contract of sale, the seller is under the obligation to deliver goods, buyer has to pay for it, जोटा कि already मु discussion करिछि। In case buyer fails or refuse to pay, जदि से फेल करिछि बा पैसा दउनी रिफ्यूज अछि, the seller as an unpaid seller shall have certain rights, सेलर को आमे अनपेड सेलर कहबा, shall have certain rights, एहार किछि अधिकार अछि। According to section 45 subsection 1 of the Sales of Goods Act 1930, Sales of Goods Act 1930 रो section 45 रे कुआ गला the seller of goods is deemed to be an unpaid seller when गोटे सेलर को आमे अनपेड सेलर, डीम्ड टू बी माने कोन, मु बहुत थोर पिला मानु कहिछि डीमिंग प्रोविजन है कुआ जाय। डीम्ड टू माने कोन, मानी निया जीवो, लॉ हिसाब रे मानी निया जीवो जे सेलर होछि अनपेड बा ताको पैसा दिया जाय केते बेले होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, जदि टोटल प्राइस तमे पे करिनो, और टेंडर्ड से प्राइस टोटल प्राइस ताकू तमे देइनो बा दबा को इच्छा करिनो, एंड सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस, तेनु करी से सेलर रो कोन अछि ना इमीडिएट एक्शन अछि से प्राइस की से क्लेम करि परिबो। व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज आसी गला प्रोमिजरी नोट केस रे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट केस रे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड, माने एक से सेल कला, एक्स सेल कला 5 लाख टंकार गुड्स, से केस रे गोटे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होला, एक्स ड्रॉ कला, वाई एक्सेप्ट कला जे 3 मास पर पैसा दवा पे, as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled, से कहूची जदि तमे किछि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेलर रिसीव करूची as conditional payment, सेतरे किछि कंडीशन मध्ये अछि, and the condition on which it is received, जेउ शर्त हिसाब रे से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को रिसीव करा जाई थिला has not been fulfilled, सी फुलफिल हेलानी by reason of degener of instrument or otherwise, 3 मास पर पैसा दबार थिला, 3 मास तमे पैसा देलनी तो कोन हे गला ना से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ता कोन हे गला ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ता डिजेनर हे गला, डिजेनर हेले कोन हबो ताहले सेलर ता पैसा पाइलानी, सेलर को हमें अनपेड बोली कहबा। द टर्म सेलर हियर इंक्लूड एनी पर्सन, सेलर कहिले कि एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ सेलर, as for instance एजेंट एंड एजेंट ऑफ सेलर, सी मध्ये सेलर अनपेड सेलर हे परिबो, टू whom the bill of lading has been endorsed, बिल ऑफ lading कोन जानि छ, सब पिला माने बुझो, मने करो दिस इज आवर इंडिया, दिस इज आवर मैप ऑफ इंडिया, एपटे अछि अरेबियन सी, एपटे अछि बे ऑफ बंगाल, एपटे अछि शायद प्रशांत महासागर, जहाँ भी अछि
लेट सपोज ये होची यूएसए यूएसए रू किछि जिंस आमे इंपोर्ट करूचे वेसल रे वेसल कहले पानी जहाज तो से केस रे गोटे डॉक्यूमेंट कोन करिया को पड़िबो ना ए जहाज वाला को ए जो जहाज रे आसुची ए जो जहाज रे माल आसुची कोन करिया को पड़िबो ना सी आसी हमर गोटे पोर्ट अछि जेंति पारादीप गोटे पोर्ट सेंति गुजरात रे गोटे पोर्ट अछि एमति बहुत पोर्ट अछि हमर विशाखापट्टनम गोटे पोर्ट अछि तो से पोर्ट रे आसी जिंस पहुंची से भेसेल रे कोन आसुची भेसेल माने जहाज रे कोन आसुची कोन कोन गुड्स रो डिस्क्रिप्शन अछि तो ये कोन करिवो ना एठी के आगे पठेबो पोर्ट को आगे पठेबो से डॉक्यूमेंट को जाय बिल ऑफ लैडिंग आमे जदि सिंपल टर्म रे बुझिबा सिंपल टर्म में बुझिबा लेट सपोज दिस इज कोलकाता ये होची हमर ओडिसा ओडिसा रा भुवनेश्वर बा कटक जहां भी तमे भाव तो ये डॉक्यूमेंट ये होची सेलर कन्साइनमेंट बिजनेस पढ़ी जो ये होची एजेंट बायर नो ये होची एजेंट तो बिल ऑफ लैडिंग कोन ना ये जो व्हीकल रे जिंस ये पठेबो ये व्हीकल रे जो जिंस पठेबो ये व्हीकल रे जो जिंस पठेबो कोन जिंस पठेला को क्वालिटी रो से सब डॉक्यूमेंट्स ए सी बा कटक रे थिबा लोक बा एजेंट पाखु पठेबो आउथरे पढ़िबे द टर्म सेलर हियर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ सेलर जे सेलर पोजीशन रे अछि एज फॉर इंस्टेंट एन एजेंट एजेंट हे परिबो टू हुम बिल ऑफ लैडिंग हैज बीन एंडोर्स्ड जहा को बिल ऑफ लैडिंग दिया जाईची और आउ के हे परिबो ए कंसाइनर ताकू मध्ये अनपेड सेलर करि परिबा मु एग्जांपल देई सरलेनी और एजेंट हु हैज हिमसेल्फ पेड और डायरेक्टली responsible for the price जीए प्राइस रिसीव करबा पई योग्य ताको हमें अनपेड सेलर कहबा एग्जांपल x sold certain goods to y for 50,000 y paid 40,000 but fails to pay balance x is unpaid seller बुझिया 50,000 टंका रो जिंस बिकिला y मात्र ताकू 40,000 टंका देइछि balance 10,000 देइनी हेन x हे जिवो अनपेड सेलर एबे हमें पढिबा राइट्स जोथि पई ए विषय अनपेड सेलर्स राइट सेक्शन 46 रे कुआ गला सेक्शन 45 रे कुआ गला मीनिंग सेक्शन 46 रे कुआ जाउची अनपेड सेलर राइट्स सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अर्थात एई एक्ट रे जेते गुडिए लॉ अछि प्रोविजन अछि ताकू सम्मान देई एंड द लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स एई समय रे बा से ट्रांजैक्शन करूथिबा समय रे जेउ लॉ इफेक्टिव अछि not withstanding that the property in goods may have passed to the buyer property in goods कहले ओनरशिप पास करा जाईची the unpaid seller of goods जदि से सेलर अनपेड अछि यानी प्राइस पाइनी as such has by implication of law साहाଯ୍य रे सी कोन करि परिबो this is A, this is B, this is C. Lion on the goods को अटकई परिबो for the price. While lion हमें केते बेले करि परिबा बेलमेंट रा प्लेस रे मध्ये पडा जाईछि lion हमें केते बेले करि परिबा जदि goods रो पोजीशन हम पाखे रे अछि ताहले हमें अटकई दबा once goods रो पोजीशन हमें ट्रांसफर करि देइजे ताहले हमें lion करि परिबा lion माने मन रखिबे सब पिला जेते बेले गुड्स रो पोजीशन आम पाखे रे अछि आमे लाइन करि परिबा सेकंड पॉइंट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर ए राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट आमे जिंस पठे देछि आम गोदाम रो किंतु खबर मिलला जे बायर इंसॉल्वेंट हे जाइछि बायर हमको पैसा दउनी जे एग्रीमेंट थिला डिलीवरी पूर्वरु से पैसा दब देलानी तो आमे कोन करि परिबा ट्रांजिट रे अटकई परिबा स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट आफ्टर ही हैज पार्टेड विथ द पोजेशन ऑफ देम पार्टेड माने जेते बेले से सेपरेटेड हे जाइछ माने निज गोडाउन रो ऑलरेडी गाड़ी बाहरी जाइछ राइट ऑफ रीसेल as limited by this act
राइट ऑफ रीसेल करि परिबो किंतु किछि लिमिटेशन अछि ओके तो ए तीनटा राइट्स से कोन करि परिबो एक्सरसाइज करि परिबो ए बी एंड सी property where the property in goods has not passed to buyer जदि ओनरशिप ट्रांसफर है the unpaid seller has in addition to other remedy the right of withholding the delivery माने in addition to other remedy addition कहिले other जो a b c point रे आमे remedy देखिले rights देखिले ताहा addition रे से कोन करि परिबो withhold करि परिबो delivery similar to and co-extensive with his right of lion stoppage in transit where the property has passed to buyer ऊपर हमें पढ़ी के आसिले प्रॉपर्टी पास टू बायर से केस रे जहा जहा राइट्स देला इन एडिशन टू दैट राइट्स राइट ऑफ विथहोल्डिंग अनपेड सेलर करि पारि an unpaid seller has expressly given the right against the goods as well as against the buyer personally which are discussed under हमें ए पॉइंट रे डिस्कशन करिबा unpaid seller right against goods तापर हमें डिस्कशन करिबा unpaid seller right against right against the buyer ओके एटी सेक्शन 55 रु 61 पर्यंत अछि against the person आगे हमें पढ़िबा against the goods against कोन कोन राइट्स अछि एग्जाम रे एमसीक्यू भर भर के आसी बोले भाई right of unpaid seller against the goods as categorized under two heading कोन the unpaid seller has the following right against the goods the one seller's lion according to subsection 1 subject to the provision of this act the unpaid seller of goods who is in possession जो सेलर अनपेड अछि एवं ता अधीन रे गुड्स अछि पोजेशन ता पोजेशन रे गुड्स अछि इज एंटाइटल्ड टू रिटर्न ताकू से अटकै परिबो पोजेशन ऑफ गुड्स पोजेशन ऑफ देम until the payment जे पर्यंत से पेमेंट रिसीव करिनी और टेंडर ऑफ प्राइस जे पर्यंत प्राइस फिक्स है रिसीव करिबा पई द फॉलोइंग केसेस नेम्ड goods have been sold without stipulation as to credit where goods has been sold on credit but the term of credit has expired where the buyer becomes insolvent exam रे पढुची को केस रे हमें राइट्स ऑफ लाइन करि परिबा एग्जांपल पढिथिबो which of the following are the cases is or are the cases where the unpaid seller can line the goods प्रथम कंडीशन लाइन करिबा पई अनपेड सेलर पोजीशन रे से गुड्स थिबा दरकार को केस रे where the goods has been sold without any stipulation as to credit माने बाकी रे हमें जिंस बिकिउ बोली किछि कंडीशन नथिला किछि शर्त नथिला किछि डिस्कशन नथिला और where the goods has been sold on credit सेकंड केस होची जिंस बाकी रे बिका जाइतिला किंतु जो टर्म रे बिका जाइतिला सेटा एक्सपायर करि गला लैप्स करि गला थर्ड पॉइंट जदि बायर बिकम इंसॉल्वेंट ये तीनटी केस रे जदि अनपेड सेलर रो पोजीशन रे गुड्स अछि ताहाले से ताकू लाइन करि पारि बुझी होतिले रिप्लाई देबे हमें आगु को बढ़िबा ए सोल्ड सर्टेन गुड्स बी for a price of 50,000 A B को 50,000 टंकार जिंस बिकिला and allowed him to pay the price within 1 month B insolvent हे गला during the period of credit condition lapse करि गला A the unpaid seller exercise the right of his lion according to subsection 2 the seller may exercise his rights of lion notwithstanding that he in the possession of goods as agent or bailey for the buyer
बेलर बेली चैप्टर आमे पढ़ीचे से कहूची ही इज इन पोजेशन ऑफ गुड्स एज एजेंट सेलर जिनस सेल करि सारला परे जदि सी एजेंट बा बेली ऑफ बायर हेई थाए ताहाले मध्य सी कोन करि परिबो राइट ऑफ लाइन करि परिबो पार्ट डिलीवरी where an unpaid seller has made part delivery माने तुमको 100 टा बैग्स डिलीवरी दबाको कुआ हेतला तमे 20 बैग्स ए पर्यंत डिलीवरी करिछ he may exercise his right of line on the remainder ता माने जिउ बैलेंस 80 रो 80 बैग रो पोजीशन तम पाखरे अछि तमे आरी अगेंस्ट ही कोन करि परिबो लाइन करि परिबो unless such part delivery has been made जे पर्यंत ए बैलेंस पार्ट को तमे डिलीवरी करिना से पर्यंत लाइन करि परिबो under such circumstances as to show an agreement to waive the line से केस रे ता पाखरे ऑप्शन मध्ये अछि से लाइन को वेव करि पारे वेव करिया माने छाडी दबा आउतरे where an unpaid seller has made part delivery जदि मु part delivery करिछि he may exercise his goods of line on the remainder बाकी against मु कोन करि परिबी लाइन करि परिबी unless such part delivery made under such circumstances as to show an agreement to waiver of line जे पर्यंत ए रिमाइंडर यानी 80 बैग अगेंस्ट रे कोनोसी एग्रीमेंट हेइनी जे मु लाइन को वेव करिबे ताहले मु रिमाइंडर गुड्स ऊपर कोन करि परिबी लाइन नहीं परिबी से कहूची अनलेस सच पार्ट डिलीवरी has been made under such circumstances as to an agreement to waive line जदि आम भितर किछि एग्रीमेंट हेइनी लाइन को वेव करिबा पई ताहले मु अटकई परिबी टर्मिनेशन ऑफ लाइन अकॉर्डिंग बहुत इंपोर्टेंट को केस रे मु टर्मिनेशन करि परिबी भाई सिंपल कथा जदि मो पैसा मते मिली गला ताहले मु काई अटकेई रखिबी अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 the unpaid seller goods loss is lying thereon unpaid seller रो लाइन सरी जीवो खत्म हे जीवो केते बेले when he deliver the goods to a carrier अरे भाई पोजीशन थिले मु लाइन करि परिबी जदि गोटा कोरियर डिपार्टमेंट को बा गोटा गाड़ी रे मु कोन कर देछि डिलीवर कर देछि और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन जिंस पठेबा पई बेली को मध्य हम कोन कर देछि अन्य एक पार्टी की ट्रांसफर कर देछि विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स विदाउट रिजर्विंग ता पाखरे कोनोसी राइट्स न रखी की विदाउट रिजर्विंग द राइट्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स बुझियला आउतरे व्हेन ही डिलीवर ही कहले एटी अनपेड सेलर गुड्स टू ए कैरियर गोटे कैरियर बा हमरो गुड्स ट्रैवल एजेंट पाखु पठै देछि किंबा अदर बेली पाखु पठैछि फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर को पठेबा पई विदाउट रिजर्विंग जी की राइट्स रखिनी ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स when the buyer or his agent lawfully obtain the possession buyer किंबा एजेंट से गुड्स रो पोजीशन नै सरले सबु पिला माने मन रखिबी लाइन मु केते बेले करि परिबी जदि मो पाखरे पोजीशन ऑफ द गुड्स अछि ताहले मु लाइन करि परिबी मो पाखे तो पोजीशन नै से मन तो नै गले तो मु लाइन का ऊपर करि where the seller has waived the right of line सेलर निजे निजे वेव कर दला कैंसिल कर दला जे आउ मु अटके की रखिबिनी तू पैसा देले दे न हल A B C D by estoppel that is where the seller so conduct himself that he leads third party to believe that lion does not exist estoppel माने मु थर्ड पार्टी के ऑलरेडी पठै साले where the seller so conducts himself that he leads third party ये third party की lead to believe that third party to believe that the lion does not exist माने अन्य जने देखिले माने जिंस पड़ी मने कर x y की जिंस सोल्ड करि दला y प्राइस दोउनी x रहला अनपेड x रो गो डाउन बाहर कोन हेची ना जिंस पड़ी की रहिची
एक्स रो गो डाउन बाहर कौन है ना जिनस पड़ी रही हेन्स कौन हम हेन्स कौन हम एक्स ताको केयर करूनी हे वर्षा खाऊची पानी खाऊची तो से अगेंस्ट रे इट ता बिहेवियर जना पड़ुची जे एक्स से जिनस को अटके रखे एक्सेप्शन माने को केस रे मु लाइन करि परिबे the unpaid seller of the goods having a line thereon does not lose his line माने आमे पढुतले टर्मिनेशन ऑफ लाइन अर्थात लाइन एई केस रे कोन कर जिवो लैप्स करि जिवो यानी सरी जिवो एक्सेप्शन कहूची एक्सेप्शन द रूल कोन कहूची ना अनपेड सेलर लाइन सरीबो नाही राइट्स ऑफ लाइन सरीबो नाही does not lose his line by reason only that he has obtained a decree for the price of the goods मने कर कोर्ट रे केस चलीछि मने कर कोर्ट रे केस चलीछि कोर्ट रे मु कोन करि गली डिक्री जीती गली जे सेलर बायर मते प्राइस दो किंतु से प्राइस देइनी किंतु से प्राइस देइनी खाली जे डिग्री पाई गली ता माने जे मोर लाइन सरी गला सेटा न जे पर्यंत मु पैसा पाइनी से पर्यंत मु देबी example A sold a car B for rupees 1 lakh and delivered the same to the railway for the purpose of transmission to the buyer A B को बिकिला माने कर A घर होची कलकत्ता B घर होची ओडिशा A कोन करूची सेलर कोन करूची ना जो गुड्स आसीबो रेल रे से रेल डिपार्टमेंट को गुड्स पठै देला the railway receipt was taken in the name of B रेलवे रिसीप्ट बी अगेंस्ट आसिला कारण आमे वंस गुड्स डिपॉजिट करले बी ताको कोन करिवो बायर ताको कोन करिवो रिसीव करिवो and sent to B now A cannot exercise the right of line ए केस रे ए आउ राइट ऑफ लाइन को एक्सरसाइज करि परिबोनी काहे कि ना ऑलरेडी आमे ट्रांसमिट कर देछे कैरियर को बायर पाखु को जिंस पठेबा पाए नेक्स्ट पॉइंट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आमे ट्रांजिट रे अटकै परिबा सेक्शन 50 ରୁ 52 राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एही एक्ट रो प्रोविजन को आखि आगे रखी व्हेन द बायर गुड्स बिकम इंसॉल्वेंट बायर ऑफ गुड्स जो लोकोटी जिंस किनिछि से देबालिया हे जाउछि अनपेड सेलर हु हैज पार्टेड विथ पोजेशन जे था पोजेशन को छाड़ी देइथिला अर्थात ट्रांजिट रे गुड्स अछि हैज अ राइट टू स्टॉपिंग देम इन द ट्रांजिट से ट्रांजिट रे अटकै पारि दैट इज टू से ही मे रिज्यूम पोजेशन बैक कर दबो हे गाड़ी तू नैया जिंस नैया हम गोडाउन as long as they are in the course of transit जे पर्यंत से ट्रांजिट कोर्स रे थिला से ताको कोन करि परिबो मगै परिबो निज पोजीशन एंड मे रिटेन देम until paid एवं ताको अटकै परिबो जे पर्यंत ताको हमें पेड करिनी और टेंडर प्राइस ऑफ द गुड्स बा गुड्स रो प्राइस हमें रिसीव करिनी एग्जांपल A of Mumbai sold certain goods to B of Delhi A होची मुंबई रो सेलर B होची दिल्ली रो बायर he delivery goods to the C a common carrier carrier कहले ट्रैवल एजेंट जो सॉरी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जे थिला से कैरियर पाखु को जिंस पठाए गला कारण ताकू पठेले सी नै कि दिल्ली रे जिंस पहुंचे for the purpose of transmission of these goods to B before the goods could reach him जिनिस पहुंचीबा आगरु B देबालिया हे गला and A came to know about it A बाबद रे जानिला A can stop the goods in transit A से goods को transit रे अटकै परिबो by giving notice to C C को notice दबो जे तमे अटकै दियो goods however 8 पढिबे stoppage in transit may be exercise हमें केते बेले stop in transit करि परिबा जदि ए कंडीशन फुलफिल थियो प्रथम कथा सेलर तो निश्चित अनपेड थिबा दरकार he must have parted with the possession of goods तम पाखरु possession of goods पळे जाइथिबा दरकार एवं goods transit रे हेथिबा दरकार जदि बायर इंसॉल्वेंट हेथिबो ए राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एवं
ए राइट्स थिबो सेक्शन 50 रो प्रोविजन अनुसार ताहले हमें अटकई पारिबा। बी एट दिल्ली ऑर्डर गुड्स ऑफ ए एट मुंबई माने बी होची दिल्ली रो बायर ए होची मुंबई रो सेलर। ए consign and forward the goods to B ए पठेई देला। On arrival at Delhi they are taken to B's warehouse B ता गोडाउन को नहीं सारलानी and सेठार रखी देला left there B refuses to take these goods and stop payment B कौन कला से जींस माने पेमेंट अटकई देला B refuses to take these goods नबा पाई मना कला एवं पेमेंट अटकई देला the goods are in transit and the unpaid seller can take back them माने बुझी होची आउथे देखो से कहूची B A consign and forward goods to B on arrival at Delhi दिल्ली रे पहुंचला परे they are taken to B रो गोडाउन को निया गला and left there सेठी थुआ हे गला किंतु B ताको एक्सेप्ट करूनी B से ट्रांसमिशन को एक्सेप्ट करूनी जदियो ता गोडाउन रे पहुंच गलानी B मना कहूची मु ए गुड्स दरकार नै कि मु पेमेंट देबी ए केस रे हमें अज्यूम करिबा जे गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट जे पर्यंत बायर तार कोन देनी कंसेंट देनी। प्रश्न आसु जे ट्रांजिट केते बेले आरंभ होबो केते बेले सरीबो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट केते बेले सो पिला मान देखि गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट गुड्स को मानि निया जीवो ये ट्रांजिट रे अछि फ्रॉम द टाइम केबे ठारू फ्रॉम द टाइम when they are delivered to a carrier जिते बेले से गोटे कैरियर यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट्स को जिनस पठा गला और अदर बेली बायर जे एजेंट अछि फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर को उद्देश्य रे ना बायर को पठेबा उद्देश्य एउठु आरंभ हो एई समय रु आरंभ हो until the buyer or his agent को पर्यंत जे पर्यंत बायर किंबा तार एजेंट इन दैट बिहाव टेक्स द डिलीवरी से डिलीवरी एक्सेप्ट करिनी फ्रॉम सच कैरियर और अदर बेली से कैरियर थारु गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट्स थारु बा सेलर रो बेली थारु आरंभ हो केते बेले ना सेलर जते बेले ट्रांसफर पाई माने ट्रांसमिशन पाई पठेला सरीबो केते बेले जे पर्यंत बायर एक्सेप्ट करिनी बा रिसीव करिनी if goods are rejected by the buyer जदि buyer ताको reject करूची and carrier or other belly continues the possession of them goods transport agent पाखरे बा belly पाखरे possession रे अछि the transit is not deemed to at end से पर्यंत हम मानिबा जे transit सरीनी बेली even if seller has refused to receive back them जदियो सेलर मना करूची जे मु पठाई थिबा जिनिस आ रिसीव करिवे नाही तथापि हमें मानिक नबा goods are still in transit when the goods are delivered जते बेले goods पठा गला to a ship chartered by the buyer ship chartered कहले जहाज बायर रो जहाज it is a question of depending the circumstances case whether they are in the possession of master of carrier or agent of the buyer सुनो जेंति हमर पायलट कुआ जाउची जल जहाज रे सॉरी उड़ा जहाज रे सेमती ताकू मास्टर कुआ जाय मास्टर ऑफ कैरियर जे से जहाज को चलेइनी where the goods are delivered to the ship chartered by the buyer it is a question depending on the circumstances as to particular case whether they are in the possession of master as a carrier or agent of the buyer माने निजस्व गाड़ी बायर निजस्व गाड़ी की तमे पठेई देलो तो से केस रे गुड्स ट्रांजिट रे अछि कि नाही केस टू केस डिपेंड करिवो एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट डिपेंड करिवो where part of deliver of the goods has been made तमे पार्ट डिलीवरी करिछ or his agent in that behalf किंबा से बायर एजेंट को पठेइछ रिमाइंडर गुड्स मे बी स्टॉप्ड इन ट्रांजिट बळका गुड्स को मध्य तमे अटकेई पारिबो ट्रांजिट रे unless a such part delivery has given in such circumstances जे पर्यंत such part of delivery has given in circumstances से भलिया circumstances रे पहुंचीनी as to show an agreement to give up possession of the whole of the goods
माने टोटाली पोजिशन रो गुड्स को दबा पाई जदि सेमिति किछि सर्कमस्टांसेस बा एग्रीमेंट हेइनी ताहले तमे बळका जिंस को मध्ये ट्रांजिट रे अटकेई पारि एनालिसिस दिया जाइछि एनालिसिस तमे पढिबो फिर भी आई एनालिसिस रे व्हेन ए ट्रांजिट कम्स टू एन एंड मु पढि दउछि देखि दउछि मु पढि दउछि आउथरे जहां हमें ऊपर पढले ताको आउथरे रिवीजन करिबो एग्जाम रे आइदर और लिखिबो एनालिसिस की डायरेक्ट लिखिबो बा डायरेक्ट प्रोविजन को लिखिबो the goods are deemed to be in course of transit from the time when they are delivered to a carrier already a point I am पढ़ी के आछे for the purpose of transmission to the buyer very good until the buyer or his agent in that web takes the delivery them from such carrier to other belly एटा हमें डिस्कशन करि से कुछ ट्रांजिट सरीबो केते बेले ए सब नंबरिंग भूल हेछि एटा 1 रो स्टार्ट कर दियो 1 2 3 and so on the right of stoppage in transit when does the transit comes to end केते बेले ट्रांजिट सरीबो the right of stoppage in transit is lost when a transit comes to an end जेते बेले ट्रांजिट सरी गला तमरो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट मध्ये सरी गला when the buyer other belly obtain the delivery buyer delivery पाई गला तमरो राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट रो खेल खतम buyer obtain delivery before the arrival of the goods at destination जिंस पहुंचीबा पूर्व मध्ये बायर कोन नै गलानी निज पोजीशन को नै गलानी it is also called interruption by buyer which can be with or without consent of the carrier माने से कैरियर कहले गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट तार बिना मतरे मध्ये से ता पोजीशन को नै पारे बायर मझिरे पसी इंटरफियर करिया माने कोन इंटरसन माने करिया माने कोन मझिरे पसी जिंस निज कंट्रोल को नै गला where the carrier or other belly acknowledge to the buyer or his agent that he hold the goods as soon as goods are loaded on the ship unless the seller has reserved the right of disposal of the goods आ माने कोन कैरियर किंबा अदर बेली acknowledges to the buyer को जणेले किंबा तार एजेंट को जणेले that he hold the goods as soon as goods are loaded to the ship जेते बेले गुड्स ता जहाज रे लोड हे गला सेते बेले बायर रो पोजीशन को पड़ेला unless the seller has reserved seller पाखरे जे पर्यंत सेलर पाखरे कोनोसी रिजर्व राइट्स नाही डिस्पोजल ऑफ द गुड्स आ माने कोन सेलर पाखरे आ किछ राइट्स नाही वंस लोड हे गला जदि कॉन्ट्रैक्टर अछि जे पर्यंत सेलर इंस्ट्रक्शन देइनी से पर्यंत गुड्स सेलर गोडाउन रो बाहरी परिबो जदि कॉन्ट्रैक्टर एभलिया कंडीशन अछि ताले सेलर पाखरे कोन हे गला राइट्स अछि ताले से केस रे एंड होबोनी बा बायर ता पोजीशन पाई किंतु एभलिया कोनोसी टर्म्स एंड कंडीशन नै कथा वार्ता हे गला एग्रीमेंट हे गला जिंस गुडी को लोड हे गला एवं बायर फोन करि जानला भाई माल मिली गला ताले से पर्यंत हमें मानि नबा जे ट्रांजिट कम्स टू एन एंड if the carrier wrongfully refuse deliver goods to buyer भूल वसत मना कर दोची deliver goods to the buyer where the goods are delivered to the carrier hired by the buyer the transit comes to an end जदि carrier को तमे जिंस पठेई देला जेउ carrier बा जेउ goods transport agent hired by the buyer ताकू हायर करितला से केस रे ट्रांजिट मध्ये सरी गला केते बेले ना जेते बेले कैरियर अधीन को गुड्स पड़ेला where the goods are delivered to a ship chartered by the buyer the transit comes to one buyer निज गाड़ी रे तमे गुड्स लोड कर देलो ताहले सरी जीवो राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट सरी जीवो तापर देखिबा how the stoppage in transit affected केमिति stoppage in transit affected हे परिबो the unpaid seller may exercise his right to stoppage in transit unpaid seller exercise करि परिबो transit रे goods को अटकेबा पई either by taking actual possession of the goods को मो अधीन को नै आसीबी or by giving notice किंबा से गोटे नोटिस दबो to his
नोटिस ऑफ हिज क्लेम जे से गुड्स निज पोजीशन को नबा पई गोटे नोटिस दउची टू द कैरियर माने जेउ जीटीए पाखु गुड्स पठेइतला ताकु नोटिस देला भाई रही जा पठान बा अदर बेली जो अदर बेली को पठेइतला इन ह्यूज पोजेशन द गुड्स आर जेउ मानक अधीन रे गुड्स अछि भाई सेलर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट पाखु गुड्स पठेला ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट कहा पाखु पठेबो ना बायर पाखु पठेबो वर्तमान जीटीए पाखरे कोन अछि गुड्स अछि ये ताकु नोटिस दउछि पठानी रखिदा such notice may be given either to person in the actual possession of the goods जेउ लोक अधीन रे एक्चुअली पोजीशन अछि से लोक को नोटिस दिया जाय परिबो और टू हिज प्रिंसिपल तार जे मुनिबो तार जे मालिक ए जीटीए रे जे मालिक थबो जीटीए रे ड्राइवर पाखरे गुड्स अछि किंतु आर जने मालिक अछि इन द लैटर केस एई केस रे कोन होबो द नोटिस टू बी इफेक्चुअल shall be given at such time and in such circumstances that the principal by exercise of reasonable diligence may communicate to his servant or agent in the time to prevent the delivery to the buyer तो सेकंड केस रे कोन होबो सेकंड केस कहले एई केस रे कोन होबो जदि प्रिंसिपल को तमे देइछो नोटिस ताले कोन होबो लैटर केस रे द नोटिस इज इफेक्चुअल नोटिस इफेक्ट केते बेले होबो shall be given at such time तमे सेई टाइम रे नोटिस दबा उचित एवं सेई सर्कमस्टेंसेस रे नोटिस दबा उचित जे प्रिंसिपल निजो को योग्य मने करिवो बाय एक्सरसाइज ए रीजनेबल डिलिजेंस मे कम्युनिकेट प्रिंसिपल कम्युनिकेट करि परिबो तार सर्वेंट प्रिंसिपल कम्युनिकेट करि परिबो तार एजेंट ता पाखरे समय अछि एवं सर्कमस्टेंसेस अछि टेलीफोन माध्यम रे अछि टू प्रिवेंट द डिलीवरी टू द बायर अर्थात से डिलीवरी की अटकेवा पाई जे तमे बायर को डिलीवरी दियो नाही बुझियला when the notice of stoppage in transit is given जेते बेले नोटिस दिया हेई गला by the seller दे देला कैरियर यानी जीटीए को किंबा अदर बेली को in the possession of goods जो माने को अधीन रे गुड्स अछि he shall redeliver the goods to से रीडेलिवरी करि परिबो और according to the direction of seller जहा कहबो सेही अनुसार हम डिलीवरी दबा the expenses of such delivery shall be borne by the seller in that case जहा भी expenses अधिका लागिबो किए बहन करिवो सेलर बहन करिवो एबे देखिबा distinction between right of line and right of stoppage in transit एमानको भितर फरक अगेन एटा ए रु स्टार्ट ए बी सी डी the essence of the right of line is to retain the possession where the right of stoppage in transit is a right to regain the possession भाई लाइन केस रे ऑलरेडी आम पाखरे पोजीशन रे अछि आमे पोजीशन रिटर्न करूची लाइन केस रे किंतु ट्रांजिट केस रे ऑलरेडी पोजीशन आम पाखरु पळेलानी आमे कोन करूचे रीपोजीशन करूचे री अगेन पोजीशन द एसेंस ऑफ राइट ऑफ लाइन इज टू रिटेन पोजीशन को रखिबा व्हेयरएज जेते बेले की राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज a right to regain possession आउ थरे हम पोजीशन को आनिबा कारण पोजीशन हम पाखरु पळे जाईची seller should be in possession of goods underline while in stoppage in transit seller केते बेले possession of the goods को नबो stoppage in transit केस रे seller should have parted with the possession seller निज पाखरु से goods को दूरेई थिबा दरकार possession should be with the carrier possession carrier पाखरे थिबा दरकार and buyer has not acquired the possession buyer possession नै नथिबा दरकार ताहेले जाय कि हमें सेलर कोन करि परिबो अनपेड सेलर कोन करि परिबो ना रीगेन करि परिबो पोजीशन बुझी होउची मो सेलर थारु जिंस पळे जाईची जीटीए पाखरे अछि बायर अधीन को जाय ताहेले मु रीगेन करि परिबी पोजीशन राइट ऑफ लाइन कैन बी एक्सरसाइज इवन व्हेन बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट बायर इंसॉल्वेंट हेइनी मु राइट ऑफ लाइन करि परिबी किंतु इट इज नॉट केस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट
जे पर्यंत बायर कौन हेनी देबालिया हेनी से पर्यंत मु स्टॉपेज इन ट्रांजिट करि परिबि बा स्टॉपेज इन ट्रांजिट केस रे बायर देबालिया हेतिबा दरकार। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिन व्हेन द राइट ऑफ लाइन एंड्स। सिंपल कथा। राइट ऑफ लाइन कहले मो पाखरे पोजीशन अछि। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट केतेबेले हबो ना जेतेबेले गुड्स टा मु ट्रांसफर कर सरली माने जेतेबेले लाइन एंड सेतेबेले राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिन्स। राइट ऑफ लाइन कम्स टू एंड के लाइन केतेबेले सरी जीवो comes to an end as soon as goods go out of the possession of the seller। ଯେତେବେଳେ ସେଲର ର ପୋଜିସନ ବାହାରକୁ ଗୁଡ୍ସ ପଳେଇଲା ରାଇଟ୍ ଅଫ ଲାଇନ୍ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଅଫ ଷ୍ଟପେଜ ଇନ୍ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କମ୍ସ ଟୁ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡ। ଷ୍ଟପେଜ ଇନ୍ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କେତେବେଳେ ସରିବ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ୍ସ ଟା ବାୟର ପୋଜିସନ କୁ ପଳେଇବ। ବୁଝିହେଲା? ଆରେ ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲା? यस सर बुझिएगा। कौन करिबा आउ समय दब सारी दबा ना नेक्स्ट क्लास को रखिबा? समय दब सारी दबा ना नेक्स्ट क्लास को रखिबा? सर आपण गुड्स अगेंस्ट राइट को सारी दियंतु। ओके नेक्स्ट पॉइंट बस इफेक्ट ऑफ सॉफ्ट सेल और प्लेस बाय द बायर। The right of line or stoppage in transit is not affected by the buyer selling or pledging goods unless seller has ascended to it। ता माने को भाई देखो x ये होची y, x होची सेलर y होची बायर। x सेल करिछि एवं गुड्स आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। x सेल कला परे गुड्स आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट अर्थात गुड्स बाटर जाउछ। ए जगह रे y कोन करूची ना z को सेल कर सरलानी। y कोन कर सरलानी ना z को सेल कर सरलानी। The right of line or stoppage in transit is not affected by the buyer selling or pledging the goods unless seller has assented to it। एवं ये y कोन करिछि x को जणे सरलानी। सेलर को जणे की नोटिस दे कि ये कोन कर दला ना z को बिकी सरलानी। y अगेन z को बिकी सरलानी। ताहले कोन हबो? This is based on the principle that the second buyer cannot stand is the better position than his seller। This is based on the principle that the second buyer कहले Z cannot stand in the better position that of seller। माने फर्स्ट बायर जे थिला फर्स्ट बायर के थिला y ठारू बेटर पोजीशन z नहीं परिबो नाही। The right of stoppage is defeated if the buyer has transferred the document of title or placed the goods to a sub buyer in good faith for a consideration। से कुछ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट माने y आउ कोन करि परिबोनी राइट ऑफ स्टॉपेज इज डिफिटेड मतलब स्टॉपेज इन ट्रांजिट मार खाई गला। जदि बायर हैज ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट माने y ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कहले ओनरशिप और प्लेस द गुड्स टू सब बायर एठी होची z ये होची सब बायर इन द गुड फेथ। y कोन करछि गुड फेथ रे कहा को पठे देछि सब बायर को यानी z को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पठे देछि एवं प्राइस रिसीव करिछि। तो से केस रे स्टॉपेज इन ट्रांजिट आउ हेई परिबो नाही। A sold certain goods to B of Mumbai। A किछि B को जिंस बिकिला। Goods are handed over to railway for the transmission to B। Goods वर्तमान रेलवे को दिया है जी B को पठेवा पाए। Meantime B sold these goods to C। B C को बिकी देला for a consideration एवं B देबालिया है गला। A can still exercise his right of stoppage in transit।
जदि बी देबालिया हेई जाउची ताहले अनपेड सेलर पाखरे राइट्स अछि ताकू स्टॉपेज इन ट्रांजिट करिबारे। आउ थरे सर कोन ए पॉइंट रे आपण कोन बुझे एथिरे आमे पढिले इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेस बाय द बायर। जदि सबसेल ट्रांजिट बेले भी बायर रीसेल करतोची ताहले तार इफेक्ट कोन रहइबो। सी कहूची तमे जदि अनपेड सेलर रो बिना परमिशन रे बिकी देइछ काहा सब सेलर ताहले अनपेड सेलर रो राइट्स अछि ताकू स्टॉप करि परिबो इन ट्रांजिट। जदि तमे अनपेड सेलर रो प्रायर परमिशन नेइछ नोटिस नेइछ तार मत नेइछ एवं रीसेल करिछ ताहले राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कोन हेजिवो मार खाइजिवो। ए केस रे कोन हला ए केस रे ए रो प्रायर बा अनपेड सेलर रो प्रायर परमिशन निया जायनि बा ताकू जणा जायनि तार मत निया जायनि सही कथा ऊपर पॉइंट रे कोआ जायतला। राइट ऑफ लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड by the buyer selling or pledging the goods unless seller has assented to it। बुझिएला why ए जगह क्लेम करि परिबन जे सेलर होची मो पाखर राइट्स अछि ना ओरिजिनल सेलर होची की एक्स। आमो एग्जांपल exception where unpaid seller right of line and stoppage in transit are defeated। से कुछ एक्सेप्शन को केस रे तमे कोन करि परिबोनी स्टॉपेज इन ट्रांजिट करि परिबो नाही। when the seller has assented to the sale or mortgage or other disposition of the goods made by the buyer। where the seller has assented seller निजर मत देछि to sell or mortgage से जिंस को सेल करिवा पई जिंस को सिक्योरिटी मॉर्गेज आकर दवा पई और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स मेड बाय द बायर। एग्जांपल सब पिला माने देखिबे से जगह रे तमे राइट ऑफ लाइन करि परिबे। ए एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ए कार्टून इन पोजेशन ऑफ वारफिंगर टू बी and agreed that B that the price will be paid to A from the sale proceed recovered from his customer। Now B sold goods to C, C duly paid to B, but anyhow B failed to make the payment to A। A wanted to exercise his right of line and ordered the wharfinger not to make delivery to C, held that the seller had assented to the resale of the goods by the buyer to sub-buyer। As a result, A's right of line is defeated। सर आमे किछि बुझी पारलु आउतरे कोन से कहला ए गोटे कॉन्ट्रैक्ट रु पसिला सेल कार्टून इन द पोजीशन ऑफ वारफिंगर टू बी। वारफिंगर गोटे जहा भी हो से मानको पाखरे किछि जिंस अछि ए कहूची से जिंस बी को बिकिबो एंड एग्रीड विथ बी दैट एवं बी सहित एहा कथावार्ता हैला जे एग्रीमेंट हैला जे प्राइस विल बी पेड टू ए from the sale proceed recovered from his customer। B जो कस्टमर को बिकिबो सेठु जा सेल प्रोसीड आसीबो से सेल प्रोसीड ए को दबो ए कथावार्ता हैला। नाउ बी एहा परे बी कोन कला सी को बिकी देला सी ड्यूली सी मध्य बी को देई देला किंतु बी ए को देला बी सी भितरे ट्रांजैक्शन कंप्लीट ए बी भितरे एग्रीमेंट हैला जे बी सी को बिकिबो एवं आठारु सेल प्रोसीड आनिले आकु दबो बी बिकिला सी देई देला किंतु ये आकु देला नाही बी ए को देला तापर ए वांटेड टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ लाइन ए एबे चाहूची राइट ऑफ लाइन करिवा पाई किंतु से करि परिबनी काहे कि ना निजे मत देइची जे तमे आकु बिकी दियो एंड ऑर्डर वारफिंगर टू नॉट टू मेक डिलीवरी से एजेंट को कहूची से लोक को कहूची तमे डिलीवरी दियो held that seller had assented to resell the goods। ए केस रे एहा विचार करा गला जे held that सेलर तमे मत देइतिलो बायर को रीसेल करिवा पई as a result तम लाइन राइट ऑफ लाइन डिफीटेड हे गला। when a document of title to the goods सब पिला माने बुझिबे document of title कहले ओनरशिप टू द गुड्स has been transferred to buyer ओनरशिप ट्रांसफर हे जाईची
Buyer transfer the document to a person who has bought goods. Buyer ମଧ୍ୟ ତାର କ'ଣ କରିଛି, ତାର buyer କୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ sub buyer ବୋଲି କହୁଛେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ transfer କରିଦେଇଛି in good faith and for value. That is for price. Then the proviso of subsection stipulates as follows. If the last mentioned transfer is by way of sale, right of line or stoppage in transit is defeated. जदि बायर ता सब बायर को सेल कर देइछि ताहले ए दीटा काम आउ काम करिवो ना, राइट ऑफ लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट ही परिवो. If the last mentioned transfer by way of place, unpaid seller's right of line stoppage only be exercised subject to right of place, right of pledging. बी पॉइंट कौन कहला सर आउथरे कहंतु, मु कहूची आउथरे कौन हजार थर कहि. When the document in title, ऊपर डॉक्यूमेंट इन टाइटल कथा कुआ जाय नथिला, किंतु ए पॉइंट रे कोन कुआ जाय छि, डॉक्यूमेंट इन टाइटल यानी ओनरशिप has been transferred to the buyer, माने ए बी को ओनरशिप ट्रांसफर कर देला, ओनरशिप, and buyer transfer the document to the person who has bought goods. बायर थारु जे किनिथिला ताकू मध्ये ये कोन करदला ना ओनरशिप ट्रांसफर करदला इन गुड फेथ and for a value एवं किछि प्राइस पाई. Then the proviso of subsection stipulate as follows. तामाने right of line बा stoppage in transit आउ unpaid seller करि परिबो नाही. Effect of stoppage. The contract of sale is not resigned when the seller exercise his right to stoppage in transit. माने मु ट्रांजिट रे जिंस अटके देली एहार माने नुह जे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हे गेला, तो कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन इन द फोर्स and the buyer can ask the delivery of the goods on payment of price. बायर अनुरोध करि परिबो जे मु प्राइस देई दउची, तमे कोन करो मो जिंस पठै दियो. लास्ट पॉइंट, राइट ऑफ रीसेल. The right of resale is a very valuable right given to the unpaid seller. भाई right of resale unpaid seller केते बेले करि पारि. In absence of this right, unpaid sellers other right against the goods, that is lion, stoppage in transit, would not have been much used because these rights only entitle unpaid seller retain the goods until buyer paid, until paid by the buyer. यार माने को, अरे भाई मो पोजीशन रे केते बेले रखिबी, मो स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ लाइन केते बेले करि पारि, सेते बेले करि पारिबी जेते बेले कोन हेतिबो ना मो पाखरे राइट टू रीसेल रो अधिकार थिबो. जदि राइट टू रीसेल अधिकार नै ताले मु रखि कि से जिंस करिवि कोन, सेही कथा ए पॉइंट रे कुआ जाय छि. The unpaid seller can exercise the right to resell of the goods under following condition. 5 goods are perishable in nature. Perishable in the nature माने मने करो फ्रूट्स, मने करो फ्रूट्स ट्रक टा जाउथिला, बायर प्राइस देइनी बट कोन से टर्म्स को ब्रीच कला, वायोलेट कला, त मु ए फ्रूट्स को केते दिन रिटर्न करि पारि. इन दैट केस मु ताको रीसेल करि पारि. Where he gives notice to the buyer of his intention to resell the goods. सेलर बिकिला बायर को, ओके, बायर प्राइस देलानी, ओके, ये ताको रिटर्न करी के रखी छी, ओके, ये ताको नोटिस देला भाई रे मु आउ गो डाउन रे स्पेस नाही, मो पैसा ब्लॉक हे की पड़ी छी गुड्स रे, मु जिंस बिकु छी, तो इन दैट केस ये रीसेल करि पारि. If after the receipt of such notice buyer fails with a reasonable time to pay or tender the price, notice दिया सरला परे तमे प्राइस दो न, the seller may resell the goods. It may be noted that in such a case a resale of the goods the seller is also entitled. ए केस रे कोन होबो देखो, recover the difference between the contract price and resale price from the original buyer as damage. मोर सेल कॉन्ट्रैक्ट हेतला 5 लाख रे, तमे पैसा देलनी गुड्स मो पाखे रही कि नष्ट होउची, मु ताको बाध्य होई कि 4.5 लाख रे सेल कर, मु रीसेल तो करि देली, किंतु ए जो डिफरेंशियल 0.5 लाख यानी 50k रो मोर लॉस हैला, तो ताको मु का ठारो रिकवरी करिवि
बायर ठारू रिकवरी करिवे रिटेन द प्रॉफिट इफ रीसेल प्राइस इज हायर देन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एवं सेलर कौनसी केस रे बाउंड नुह जे प्रॉफिट को तुमको फेरेबा पाई फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट हेतिला 5 लाख रे सेल करिवा पाई तमे पैसा देलनी वायोलेट कल ब्रीच कल जिंस नेलनी अनपेड सेलर ताको 6 लाख टका रे बिकी देला नोटिस देकी एटी प्रॉफिट केते हला 1 लाख रो प्रॉफिट हला ए 1 लाख प्रॉफिट अनपेड सेलर निज पाखे रखिबो तुमको दबो where an unpaid seller who has exercised his right of line or stoppage in transit resell the goods. The subsequent buyer acquire the good title thereof as against the original buyer despite of fact that notice of resale has not been given by the seller to the original buyer. Out there. Where an unpaid seller who has exercised his rights ଯେତେବେଳେ ଅନପେଡ୍ ସେଲର ନିଜର ରାଇଟ୍ସ କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଛି ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟପେଜ ଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିସେଲ୍ ଦ ଗୁଡ୍ସ ଯଦି ସେ ଗୁଡ୍ସ କୁ ରିସେଲ୍ କରୁଛି ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ବାୟର ଆକ୍ୱାର ଦ ଗୁଡ୍ ଟାଇଟଲ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ବାୟର କହିଲେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଦଉନି ଏକ୍ସ ସେ ଜିନିଷକୁ ଏଗେନ୍ ଜେଡ୍ କୁ ସେଲ୍ କରିଦେଲା ଇଏ ହଉଛି ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ବାୟର ये गुड टाइटल पाइबो as against of original buyer respect the fact that notice of resale has not been given by seller to the original buyer जदि भी ये सेलर कौन करेनी ये सेलर एक्स थिला सेलर ये थिला ओरिजिनल बायर जदियो या को नोटिस देइनी जदि भी न देइछि कोनोसी केस रे तो आर टाइटल इफेक्ट होबनी आर टाइटल इफेक्ट होबनी ए रीसेल बाय सेलर ए रीसेल बाय द सेलर जदि सेलर किछि रीसेल कर दउछि where right of resale is expressly reserved जो जगह रे रीसेल करिबा पई कॉन्ट्रैक्ट रे थिला sometimes it is expressly agreed between the seller and seller buyer भितर ये कथावार्ता होई थाए that in case buyer makes default जदि भाई तमे कोन कलो डिफॉल्ट करूचो टर्म्स एंड कंडीशन को वायोलेट करूचो मते आउ गोटे भलो बायर मिलुची भलो प्राइस दउची मु ताको रीसेल करते the seller will resell the goods to some other person in such a case seller is said to have reserved the right of resale and he may resell the goods on buyer's default where the property in goods has not been passed to the buyer जदि प्रॉपर्टी इन गुड्स कहले ओनरशिप बायर को ट्रांसफर होइनी अनपेड सेलर पाखरे राइट्स अछि has in addition to his remedies ताको जहाँ भी प्रोटेक्शन दिया जाइतिला ता एडिशन रे ए राइट ऑफ withholding the delivery of goods से withhold करि दबो delivery of goods this right is similar to the line एहा को called as quasi line बुझियला yes आउ गुटे पार्ट रे आमे कवर करिबा राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर ओके तो काइंडली आको रिवीजन करी के आसीथिबो लास्ट क्लास रे यानी नेक्स्ट क्लास रे प्रथमे ए पार्ट को रिवीजन करेबी आउ न्यू पार्ट स्टार्ट करेबी ओके तो आजि पई एतिकी फुनी देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे।